Every day before the sun goes down, women in this part of the Sindhudurg district in Maharashtra are seen heading back from the forest with a load of firewood on their heads. For years, forest wood has been used as a primary source of cooking fuel by these villagers. 42-year-old Bhavna lives in a village called Zarap in Sindhudurg. लाकडं तोडून आणायला रानात गेल्यानंतर ते लाकडं तोडायला लागतात. ती तोडून आणल्यानंतर भरा बांधतो, घेऊन येतो, घेऊन आल्यानंतर ते सुकवायला लागतात. त्याच्यानंतर सुकल्यानंतर चुलीत लावतो. सबंध दिवस म्हणजे सकाळचं संध्याकाळचं भाकरी वगैरे वाजायला तरी कमीत कमी 5 तास जातात. This dependency on fuel wood is mainly because many of the rural families still cannot afford an alternative energy source like a gas cylinder. Most women, therefore, have no choice but to expose themselves to the toxic fumes of the burning wood. जे चूल पेटवताना डोळे दुखतात एक पहिली गोष्ट, नंतर डोळ्यातून पाणी येतं, डोक्यात दुखतं, म्हणजे दमो कोणाक असता तो दमो चालू जाता जोरात असो, आणि फुकणीने फू करतो ना त्यावेळेला खूपच म्हणजे धाप लागल्यासारखं कधी कधी होतं अशी. The widespread consumption of fuel wood has also put pressure on the fragile ecosystem of this coastal district. Nearly 50% of Sindhudurg is covered with dense rainforests, most of it privately owned. यहाँ का जो फॉरेस्ट है दैट इज़ प्राइमरीली ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, और जो मतलब यहाँ पे अराउंड 89% इज़ ऑफ प्राइवेट ओनरशिप और ओनली 11% इज़ ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप. क्या है कि बेसिकली यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं था. उनके पास लैंड है, उनके पास जंगल है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था. और आज भी ऐसे बहुत से फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स, उनके पास लैंड है, जंगल है, जंगल में पेड़ है, लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है. तो वो क्या करते हैं कि एक 10 साल में 20 साल में वो जो स्ट्रेच रहता है, वो पैच रहता है, वो पूरा क्लियर फिल कर देते हैं. तो जैसे कि उनको पैसा मिल जाता है. बाकी जो भी ट्रीज़ रहेंगे जिसका आपको इकोनॉमिक यूज़ डायरेक्टली नहीं है, दैट कैन बी यूज एज ए फ्यूल वुड. किसी को कुछ पता नहीं कि हम क्या काट रहे हैं, और जो है तो एक तो हमें वो फ्यूल वुड के लिए यूज़ करना है, या फिर वो यानी कि वो लोकल हो या फिर बेचने के लिए हो. According to a study by local conservation group, Bhagirath Gram Vikas Pratishthan, an average family in Sindhudurg uses about 10 kg of fuel wood every day. And in the absence of any affordable alternative, this demand continues to increase. पर फैमिली 10 kg लकड़ी जब लगेगी तो समझ लो मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 80,000 फैमिली है जो गांव में रहते हैं. हमारे डिस्ट्रिक्ट का आबादी है कुल मिलाकर 12 लाख. सो हर दिन इतना लकड़ी जाएगा. समझ लो 100 kg का बायोमास जंगल है. सो 10 kg ऑफ फायरवुड निकल सकता है, वो जो सूखा रहता है. जब वो सूखा लकड़ी इस्तेमाल करेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज दैट कॉजेस नेवर डिफॉरेस्टेशन. बट व्हेन द डिमांड गोज अप टू 10%, देन ही विल कट अ फॉरेस्ट. आपली गाडी खाली येईल लक्षात ठेवा. आपण समजा स्वार्थी झालो, एखाद्याला वाटलं. Dr. Prasad Deodhar is the founder of Bhagirath Gram Vikas Pratishthan. Having worked with the rural community in Sindhudurg for over 25 years, his endeavor has been to make these villages smoke-free by reducing the growing dependency on fuel wood. An endeavor he has been trying to fulfill through biogas as an indigenous source of renewable energy. The premise on which the Bhagirath Biogas project has been based is simple. Most farmers here own livestock, and the manure produced is enough for a household to run their own biogas unit. काऊ itself is economically viable entity. सिर्फ बायोगैस होना चाहिए. एक गाय जब मेरे पास होगी, एक बछड़ा उसका होगा, और उसका यूरिन, हमारा टॉयलेट का वेस्ट जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बायोगैस में, तो 4 आदमी का पूरा खाना हो जाता है. सो एक गाय के ऊपर एक फैमिली निर्भर हो सकती है. Biogas is a sustainable fuel that's produced when organic matter, like food or animal waste, is broken down by microorganisms in the absence of oxygen. In this process, the methane emitted from animal manure is trapped inside a dome-like structure
and can be used in the form of compressed gas. Recent studies show that a biogas stove reduces indoor house pollution by almost 75% when compared to a firewood stove. It is in fact found to be a greener source of energy even when compared to natural gas from fossil fuels. According to Dr. Prasad, this is also a more viable source of energy for a rural community, where agricultural waste can be recycled as digester for the biogas, thereby minimizing the harmful effects of methane directly emitted from animal manure. We are not producing methane, we are producing methane and utilizing it for burning. So end product eliminated in the atmosphere is not the methane, because we burn the methane and we emit CO2, water vapor, and we take calorie out of it. So what amount of methane emitted after construction of a biogas is very negligible. And if you compare the emitted methane and utilized methane, that ratio is almost 80-20. Vikas Sawant used to be a daily wage laborer. He now specializes in the construction of biogas units and has built nearly 300 of them in the backyard of village homes across Sindhudurg. It takes him approximately a week to build a biogas unit. That's about 2 cubic meters in size. It's a job that requires a certain amount of technical precision, expertise he and other local masons have gained through on-the-job training sessions from Bhagirath. मग त्या लोकांनी ज्यावेळी बायोगॅस घेतलं त्यावेळी आमच्या लक्षात आलं की बायोगॅस जे गौंडी आलेले बाहेरनं ते बाहेरनं येऊन जर आमच्या गावात एवढं काम करतात तर आम्ही इथे राहून पण ते काम शिकू शकतो. म्हणून ते आम्ही काम चालू केलं आणि शिकलो आणि बायोगॅस बांधकाम चालू केलं. पहिल्यांदा आम्ही ज्यावेळी मोलमजुरी करायचो त्यावेळी एवढा आमच्याजवळ म्हणजे पैसा वगैरे हातात यायचा नाही. म्हणजे ताच थोडक्यातच असा पैसा वगैरे यायचा आणि मिळालं तर काम मिळायचं. पण आता वर्षाचे 12 महिने 6 ते 7 महिने तर आम्हाला बायोगॅसचं काम मिळतं. However, not every farmer was convinced about investing 25,000 rupees on this new technology. The challenge was to convert their financial cost as a long-term social benefit for the entire family. Single time investment of 25,000 rupees is never a priority as far as the rural area is concerned. उसके पास 25,000 आते हैं तो वो शादी के सोचेगी और कोई सोचेगी, मकान की सोचेगी. एनर्जी इज़ नॉट द टॉप प्रायोरिटी. हमने एनर्जी को टॉप प्रायोरिटी बताया, लोगों को ये बताया कि भैया ये निपट ले 25 साल तक चलेगा, आपका पे बैक पीरियड 3 साल में ही हो जाएगा. समझ लो आपको एक दिन में 30 रुपये का गैस मिलता है, सो आपको 30 रुपये बचेगा. हमने फार्मर को यह कन्विंस किया पैसा बचाना का मतलब पैसा कमाना है. Bhagirath's biogas initiative has also received the support of the district administration. By incentivizing this transition from fuel wood to a cleaner source of energy for local villagers. I think major challenge is convincing the people. Anything new, people are a little apprehensive. So making them understand about how it's sustainable, how it's cost effective. So we are giving them an incentive of around 14,500 per beneficiary. The government has given every district targets of how to switching to sustainable fuel. So that is, I think, financial incentives are a huge way. So far, Dr. Prasad's organization has helped build over 8,500 biogas units across 150 villages in Sindhudurg. A significant reason for this success rate could be attributed to a user-friendly ecosystem. The project has gone the extra mile to ensure availability of a dedicated team to biogas specialists trained to construct new units, but more importantly, take on repair and maintenance work, addressing a gap widely prevalent in smaller biogas setups. Our success rate is almost 98%. हम लोग फार्मर से जाकर बात करते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं, उनको बायोगैस कैसे तैयार होता है बताते हैं. We ask them, we have trained mason, जो ट्रेन मेसन है उनसे सी बायोगैस बनवाइए. सुपरवाइज बायोगैस किया जाता है. बायोगैस का एक कार्ड भी भगीरथ के पास रहता है और उस कार्ड पे सब मेजर लिखे हुए रहते हैं.
सो सक्सेस ऑफ बायोगैस 3 चीज़ पर निर्भर है। उसका मेजरमेंट ठीक है कि नहीं, उसका वॉल्यूम ठीक है कि नहीं, और तीसरा लेवल ठीक है कि नहीं। और लेवल, मेजर, ये 3 चीज़ें इकट्ठा होती है तो बायोगैस का सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। The success of biogas in this coastal district is also uniquely led by the women, who were able to convert their entire community to this form of clean energy. Jyoti Pavaskar is one of the first from her village to switch to biogas. It wasn't difficult to convince her to make the switch. Once she discovered that apart from it being a smoke-free way to cook, it also saved her a lot of time. आता आम्ही बायोगॅस म्हणजे बांधल्यापासून आम्ही जंगलात जात नाही, कारण जेवण आमचं कसं लवकर होतं, कारण आम्हाला भगीरथच्या माध्यमातून 10 लिटरचे कुकर दिलेले आहेत आणि गॅसवर कसं कुकर एकदा लावला तर अर्ध्या तासामध्ये जेवण होतं. भाजी चपाती वगैरे ह्याच्यावर अशी केली तर अर्ध्या तासामध्ये जेवण होतं आणि त्या उर्वरित आमचा जो वेळ आहे तो आम्हाला शेतामध्ये काम करायला मदत होते, दूध धंद्यामध्ये काम करायला मदत होते, आमच्याकडे गांडूळ खत आहे त्याच्यामध्ये काम करायला वेळ मिळतो आम्हाला. म्हणजे जी आमची जी काय इतर साधनं होती त्याच्यात आता आम्हाला वेळ द्यायला टाईम मिळतो बायोगॅसमुळे. More women followed her lead and moved to this quicker and cleaner alternative for cooking. They began using their time to learn new skills that could generate an income for them and started a dairy business in the community. Today, Jyoti's village, Nivje, runs one of the biggest dairy collection centers in the region. So far, the biogas project has empowered over 2,500 women from Sindhudurg to start agricultural businesses like a piggery or a poultry farm. महिला परिवर्तन का न्यूक्लियस हो सकती है। हमने ये तय किया, उसको मुर्गी पालन सिखाएंगे, उसको गाय देंगे, उसको बकरी देंगे, और गाय, बकरी, पिगरी, ये सब चीज़ें जो है दे स्ट्रेंथन द बेसिकली इकोनॉमी ऑफ रूरल इंडिया। उसको चूल्हे की आदत है, उसको आदत होनी चाहिए क्लीन फ्यूल की, और एक दफ़ा उसने क्लीन फ्यूल की आदत कर ली तो वो फिर से नहीं जाएगी चूल्हे के पास, क्योंकि उसको मालूम है ना सफरिंग क्या है। उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मालूम नहीं है, उसको इन हाउस गैस पोल्यूशन मालूम नहीं है, बट उसको स्पाज्म तो बैठता है, अस्थमा तो ट्रिगर होता है, कैटरैक्ट तो उसको अर्ली आता है। सो ये सब वो देखती है। Biogas can play an important role in India's transition to clean energy by 2030. With a livestock population of nearly 500 million, the country has the potential to generate 1.5 metric tons of biogas every year. However, the focus as of now still seems to be on expanding industrial biogas units. The success of this homegrown initiative in Sindhudurg, however, has proven that household biogas units can be more than just an affordable clean energy solution. It can be the source of generating livelihoods for thousands of people across rural India. Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.